गुरु प्रसाद स्वामी महाराज की Śrīla Prabhupāda ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And today reading from 3rd canto, 2nd chapter, text number 20. I just want to mention something first. That I notice in most places here in India, there's a tendency to chant Hari Ram, but it's Hari Rama, not Hari Ram. That's a Hindi, Gujarati, Marathi contamination. मैंने देखा है कि भारत में कई जगह पर लोग हरे राम जप करते हैं, परंतु उनको राम शब्द अच्छे से बोलना चाहिए, क्योंकि वो हिंदी और गुजराती भाषा में बोलने के कारण वो संस्कृत में जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है वो नहीं करते. Dhananjaya Goswami says, you must chant the 32 symbols of the Maha Mantra. 32 syllables of Maha Mantra. It's not a 28 syllable mantra. It's not a 28 syllable mantra. So another slight variation that has crept into ISKCON is Ramo. No. This is a Bengali also deviation. No. Like in South India they say Krishna. No. But the proper is Rama, not Ramo. No. Prabhupada said one time, who is this Ramo? No. And Prabhupada was Bengali, but he never said Ramo. No. So it's not a Bengali mantra, it's not a Hindi mantra, it's not a Marathi mantra or Gujarati mantra. It's Sanskrit mantra. No. Okay. So now we'll read the verse for today. Tattaiva chanye naraloka vira Ya ahave Krishna mukaravinda Netrai pibanto nayanabhirama Partastra puta padamapurasya Tattaiva chanye naraloka vira Ya ahave Krishna mukarabindam Netrai pibanto nayanabhiraman Partastra puta padamapurasya Tattaiva chanye naraloka vira Ahave Krishna mukharavindam Netre pibanto nayanabhiraman Parthastra puta
पद्मापुरस्य ततस्तपूता परमापुरस्य तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रैः पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रपूतः पद्मापुरस्य वचन्ये नरलोकवीरा आहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रैः पिबन्तो मृत्युञ्जयवीरम् ततस्त्रपूतं परमापुरस्य वैष्णवी तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखाभिरामम् ततस्तपूता परमापुरस्य तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रैः पिबन्तो नरनाभिरामम् ततस्तपूता परमापुरस्य एव ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दम् तथा अर्थात अनुवाद तात्पर्य तथा ही एव च तथा निश्चय ही अन्ये नरलोक मानव समाज वीरा योद्धा ये जो आहवे युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की में कृष्ण भगवान कृष्ण का मुखारविंदम कमल के फूल जैसा मुंह नेत्रों से देखते हुए नयन अभिरामम आँखों को अति अच्छा लगने वाले पार्थ अर्जुन के अस्त्रपूतः बाणों से शुद्ध हुआ पदम आपको प्राप्त किया अस्य उनका अनुवाद निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए
और आंखों को अति मनभावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत नाम प्राप्त किया। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम। You can stop where it says Brahma Jyoti. It says glare of his body, Brahma Jyoti. तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में दो उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने। किंतु परम पूर्ण होने से भगवान के ये दो प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगे, किंतु अंततः एक ही होते हैं। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य। उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था, किंतु युद्ध भूमि में भगवान के कमलवत मुख का दर्शन किया था, उसी तरह भगवत धाम प्राप्त किया जिस तरह भगवान के भक्त प्राप्त करते हैं। दृष्टा की आंखों को अच्छा लगने वाले ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब युद्ध भूमि के दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने भगवान कृष्ण को सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुषुप्त भावना जागृत हो उठी। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा, किंतु उसने उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखा, जिससे उसका प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसीलिए शिशुपाल ने भगवान के शरीर की निर्विशेष ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भगवान से तादात्म्य प्राप्त किया। Om Jnanatimanandasya Gananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Vichaitanya Manobhishtam Stapidam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Darati Swaparantikam Namom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a very nice purport by Śrīla Prabhupāda. यह श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही सुंदर तात्पर्य है, Full of so many important points about this verse. इस श्लोक के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु तात्पर्य में बताए गए हैं। So it begins by saying, that Naraloka Vira, that these warriors who were fighting against the Pandavas were very great warriors. They were very capable. तो इस श्लोक प्रारंभ होता है नरलोक वीरा शब्द से, जिसका मतलब होता है कि ये योद्धा जो पांडवों के खिलाफ थे ये भी बहुत ही शक्तिशाली और वीर थे। Otherwise, as Śrīla Prabhupada has explained, because they were following, even though they were following Duryodhana, they were following perfectly as soldiers, doing their duty. तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि यद्यपि वो दुर्योधन का अनुसरण कर रहे थे, परंतु वो उसको अपना कर्तव्य समझकर पूरी तरह से कर रहे थे। Therefore, there was no fault in their performance. इसलिए उनके जो कर्तव्य थे उसमें कुछ गलती नहीं। And so they were very fortunate to see the lotus-like face of Krishna. वो लोग बहुत सौभाग्यशाली थे कि भगवान के कमल सदृश मुख को देख पा रहे थे। And because of that, because they actually seeing, and not only seeing, but it says, that Krishna Mukaravindam Netrai Pibanto, that they were drinking this vision, drinking with their eyes the vision of Krishna's beautiful lotus face. तो वो ना केवल देख रहे थे, अपितु अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के सुंदर मुख को पी रहे थे, उसकी सुंदरता को पी रहे थे। Krishna's lotus face is so beautiful that everyone is attracted. भगवान का मुख कमल इतना सुंदर है कि सभी उससे आकर्षित हो जाते हैं। In the Bhagavatam, it says that
stira chara vijinagna susmita shimukena, that all living entities, from all moving and non-moving, all their sinful activities are destroyed just by the beautiful smile coming from Krishna's lotus face. श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि संसार के सारे क्षण और अक्षर जीव उन सबके सारे पाप खत्म हो जाते हैं भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर. This is the actual proper treatment for the eyes. ये आंखों का वास्तविक इलाज है. We go to the optometrist, we get some glasses or some drops, you know. हम कभी-कभी आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कुछ चश्मा लगा देते हैं. But it doesn't help the eyes. No. परंतु वो आंखों की मदद नहीं करता. Because the real eyes are the eyes of the heart. क्योंकि वास्तविक आंखें हृदय की आंखें होती हैं. Santa Sadaiva Hridayashu Vilokayanti. No, these are Vilokayanti. They are the best eyes. No. संत जो भगवान को अपने हृदय की आंखों से देखते हैं, उनकी मुख्य सबसे अच्छी आंखें होती हैं. Now everyone is seeing through their heart, but there's so much dust in front of their eyes of the heart. अभी सभी लोग अपने हृदय से देखने का प्रयास करते हैं, परंतु हृदय की आंखों के सामने बहुत गंदगी जमा हुई है. Therefore, they're not seeing clearly. इसलिए वो स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं. They're looking for Krishna. वो कृष्ण को देखना चाहते हैं. Everyone is looking for Krishna. हर व्यक्ति कृष्ण को देखना चाहता है. Param, that as Lord Chaitanya Mahaprabhu says, that he says that that when we chant the holy name, you know, that what we're really doing is we're looking for Krishna. Anandam buddhi vardhanam patipadam pratamitas vadhanam. At every step, every living entity is looking for Krishna. चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो वास्तविकता में हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और हर कदम पर हम कृष्ण को पाना चाहते हैं. But with the dust covering the heart, we see, instead of seeing Krishna as the object, the ultimate object of our love, we see mother, father, son, daughter, husband, wife, etc. और जब हम हृदय गंदा रहता है तो हम उसमें भगवान कृष्ण को अपने प्रेम के मुख्य केंद्र की बजाय अपने माता पिता भाई बहन उनको अपने प्रेम का मुख्य केंद्र बनाते हैं. Very bad substitutes. No. ये बहुत खराब प्रतिरूप है. So, whatever manifestation of love we find in this world is just a small atomic intent to find Krishna. तो यहाँ पर संसार में हम जो भी प्रेम देखते हैं वो भगवान कृष्ण के प्रेम का एक बहुत अणुगत बहुत सूक्ष्म रूप के जैसा देखते हैं. So Śrīla Prabhupāda makes the point at the beginning of the purport that yada hi glamisha bhavati bharata abhyutanam adharmasya, that or paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam, that Krishna is blessing the sadhus, but he's also blessing the duskritas. No? श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य के प्रारंभ में बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जब आते हैं तो साधुओं को भी आशीर्वाद देते हैं परंतु दुष्टों को भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं. He's delivering the sadhus and he's also delivering the duskritas. No? वो साधुओं को भी उद्धार कर रहे हैं और दुष्टों का भी उद्धार कर रहे हैं. But the sadhus, they go to Vikunta. No? तो साधु वैकुंठ जाते हैं And the duskritas, they go to Brahman. No? और जो दुष्ट हैं वो ब्रह्मज्योति में जाते हैं. So, but these were not duskritas, these were neutral persons. पर ये लोग यहाँ पर दुष्कृत नहीं थे, ये तो मध्यस्थ थे, न्यूट्रल लोग थे. They were pious because they were following the Kshatriyas, doing their duty. वो क्षत्रिय अपना कर्तव्य कर रहे थे, इसलिए पुण्यशाली भी थे. And when they saw the beautiful lotus face of Krishna, they went to Vikunta. जब उन्होंने भगवान के सुंदर मुख कमल को देखा तो वैकुंठ चले गए.
No, generally it takes a big effort to go to Vikunta सामान्यतः वैकुंठ जाने के लिए बहुत मेहनत बहुत कार्य करना पड़ता है because we're distracted by so many things in this world. क्योंकि इस संसार में हमारा हमारा मन व्यवधान आता है बहुत सारी वस्तुओं के द्वारा That's why Śrīla Prabhupāda mentions in one purport in the Gajendra Mokshana that just like Gajendra, he remembered some prayers from his previous life. जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद गजेंद्र मोक्ष के स्थान पर बताते हैं कि गजेंद्र ने पिछले जन्म में जो प्रार्थनाएं सीखी थी वो उसको याद आई And by remembering those prayers, Lord Vishnu came and liberated him. उन प्रार्थनाओं को याद करने से भगवान विष्णु आ गए और गजेंद्र को मोक्ष मिल गया So therefore we should memorize some prayers, like prayers of Queen Kunti, prayers of Prasad Maharaj, some beautiful prayers, especially Kunti because she's speaking about Krishna. तो इसलिए हमें कुछ प्रार्थनाएं याद करनी चाहिए जैसे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं विशेष रूप से कुंती महारानी की प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण के बारे में बहुत बताती हैं Or the prayers of Vasudeva and Devaki. वसुदेव और देवकी की जो प्रार्थनाएं हैं वो भी याद करना चाहिए Or the prayers of Nanda Maharaj. नंद महाराज की प्रार्थनाएं भी याद करना चाहिए Or the prayers of the gopis, even better. गोपियों की प्रार्थनाएं भी और भी अच्छी हैं Then if we remember that, we can go to Goloka Vrindavan. If we have some problem, those prayers will come to our consciousness and we can go with Krishna. अगर हमें कुछ समस्या आती है और हम उन प्रार्थनाओं को याद करते हैं उनको ध्यान से करते हैं तो हम भगवान के साथ भगवान के धाम में जा सकते हैं Just like it's popular here in India to memorize the Gopi Gita. यहाँ भारत में गोपी गीत को कंठस्थ करना बहुत प्रसिद्ध है But we don't just memorize it so we can recite it like a parrot. No. और हम केवल इसीलिए कंठस्थ नहीं करते हैं कि हम हर जगह जाके बता सकें उसको Even if you simply recite it in Gujarati, no. गुजराती में भी उसको कंठस्थ करेंगे It may be difficult to remember everything in Sanskrit, although it's very beautiful. But even if you remember it in Gujarati, then, but you meditate on the meaning, then you can go to Goloka Vrindavan. हो सकता है संस्कृत में पूरा प्रार्थना याद करना कठिन हो परंतु अगर उसके गुजराती अर्थ को भी हम याद कर सकें तो हम उसके द्वारा भी भगवत नाम ले सकते हैं So this drinking through the eyes is very natural for a devotee. भक्त के लिए बहुत सामान्य होता है कि भगवान की सुंदरता को अपनी आंखों से पिए In the second canto it says, Pibanti ye bhagavata atmana satam, that one should learn to drink katamrita, this kata amrita, and then one's consciousness will be purified. श्रीमद् भागवतम द्वितीय श्लोक में बताया जाता है कि व्यक्ति को इस भगवत कथामृत को पीने की कला जानना चाहिए तब वो भक्ति को प्राप्त करेगा Duno ticha vishaya vidushita sayam, that all the impure things will go away from the heart. हृदय में से सारी की सारी गंदी वस्तुएं चली जाएंगी अगर हम भगवान की कथामृत का पान करते हैं And we will remember the lotus feet of Krishna. और हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों को याद कर पाएंगे Charanti Sarodhantikam, that we will remember the lotus feet of Krishna and we can go back home, back to Godhead. हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं और स्मरण करके भगवान नाम ले सकते हैं The wives of the Brahmins, when they were summoned by Krishna's friends, they ran toward Krishna. They had never seen Krishna before. जो ब्राह्मण की पत्नियों को जब कृष्ण के बारे में बताया गया तो उन्होंने कृष्ण को समय नहीं देखा था इसलिए कृष्ण के दर्शन करने के लिए एकदम भागने लगी They didn't even take time to arrange their hair or anything. They just ran toward Krishna. उन्होंने अपने बाल को संवारने के लिए भी प्रतीक्षा नहीं किया सीधे कृष्ण को दर्शन के लिए भागने लगी And when they saw Krishna, they were stunned and they stood like statues. जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो वो एक पत्थर की मूर्ति के जैसे स्तब्ध हो गए And they began to drink the beauty of Krishna through their eyes. और भगवान कृष्ण की सुंदरता को अपनी आंखों से पीने लगे And Krishna was standing, twirling a lotus flower in one hand, with his hand on the shoulder of one cowherd boy, and smiling. भगवान कृष्ण के एक हाथ में कमल था और उनका दूसरा हाथ एक गोप बालक के कंधे पर था और मुस्कुरा रहे थे And immediately they said, Krishna,
we want to go with you to Vrindavan. और तुरंत ही उन लोगों ने कहा कि कृष्ण हम आपके साथ वृंदावन जाना चाहते हैं। We don't want to stay here with these useless husbands. No. हमें निरर्थक पतियों के साथ रहना नहीं चाहते हैं। They're doing these materialistic yagyas. वो ये भौतिकतावादी यज्ञ कर रहे हैं। So all the men should be careful doing their materialistic yagya of business. No. तो पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए कि ये भौतिकतावादी यज्ञ करेंगे तो ये व्यापार के जैसा होगा। Just like someone told me the other day in Rajasthan that there's a saying that let the wife pray and the man will do business. She will pray for him. No. राजस्थान में जब महाराज यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने सुना था कि कुछ ऐसी कहावत है कि पत्नियों को पति के अच्छे व्यापार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। But if she becomes too purified, she may just go to the temple. No. अगर वो और शुद्ध हो जाते हैं तो पत्नी शुद्ध होने के बाद मंदिर जाने लगती है। Forget about this useless husband. He doesn't chant Hare Krishna. No. और वो सोचती है कि जो निरर्थक पति है वो हरे कृष्ण का जप भी नहीं करते। He's only thinking about money. No. पैसे के बारे में सोचता रहता है। No. And Lord Chaitanya says, Nadana. No. चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि धन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। So, if you want to have a secure marriage, you make sure you chant Hare Krishna and you be the guru of the wife. No. तो अगर पति चाहते हैं कि उनका विवाह संबंध सुदृढ़ रहे तो उनको हरे कृष्ण जप करना चाहिए और अपनी पति के गुरु के समान कार्य करना चाहिए। But guru does not mean exploiter, it means servant. No. गुरु का ये मतलब नहीं होता है कि शोषण करे, गुरु का मतलब होता है कि सेवा करे, सेवक के समान। When Gorkishore Das Babaji, one young, just married young couple, came to him and the man said, Babaji, please give blessings. Please give me blessings for my marriage. तो गोरकिशोर दास बाबा जी के पास एक तुरंत शादीशुदा पति पत्नी आए थे और पति ने उनसे बोला कि बाबा जी हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए। And he said, yes, my blessing is you should wash her clothes. No. मेरा गोरकिशोर दास बाबा जी ने बोला कि मेरा ये आशीर्वाद है कि आप उसके कपड़े धोइए। And you can cook for her and serve her prasada. आप उनके लिए भोजन बनाइए और उनको प्रसाद सेवा करिए। So otherwise he was saying, you didn't just obtain a servant by getting married. No. आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शादी के बाद शादी करके आपको एक नौकर मिल गया। That husband and wife are both servant of one another. पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। The services are different, but they should always see that way. Not that the husband thinks I'm the enjoyer and I'm the purusha, she is the prakriti. No. दोनों की सेवाओं का प्रकार अलग अलग हो सकता है, परंतु इस पति को इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि मैं भोग करने वाला हूँ और मैं पुरुष हूँ और वो प्रकृति है। No. That along with the position of purusha comes the responsibility of being guru and having controlled senses and giving Krishna consciousness. No. पुरुष होने की जिम्मेदारी के साथ साथ या गुरु होने की जिम्मेदारी के साथ साथ ये भी आता है कि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करें और कृष्ण भक्ति को दूसरों को प्रदान करें। Sometimes I've seen in big programs that all the women will be sitting and chanting and the men are over talking about business. No. कभी-कभी बड़े प्रोग्राम में मैं देखता हूँ कि माताएं जो हैं वो बैठ के जप करती हैं, कीर्तन करती हैं, परंतु प्रोग्राम के बीच में जो पुरुष हैं वो मोबाइल पे बात करते रहते हैं बाहर जाकर। But the Vaishnava society, everyone should be hearing about Krishna, especially the men. तो वैष्णव समाज में हम देखते हैं कि सभी को कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, विशेष रूप से पुरुषों को भगवान के बारे में बहुत सुनना चाहिए। And then they become Krishna conscious and make sure that the family is Krishna conscious. और जब वो अच्छे कृष्ण भक्त बन जाते हैं तो वो ये निश्चित करना चाहिए कि उनका पूरा परिवार कृष्ण भक्ति करे। So anyway, going back to the purport, everybody was liberated except for Shishupal. Everybody went to Vikunta except for Shishupal. तात्पर्य में ये बताया गया है कि शिशुपाल के अलावा सभी लोग वैकुंठ चले गए। And Duryodhana. No. और दुर्योधन They both attained, well, Duryodhana, I don't know what he attained, but Shishupal, he attained Brahman. No. He merged into the body of Krishna. दुर्योधन के बारे में उतना स्पष्ट नहीं है, परंतु शिशुपाल तो भगवान कृष्ण के शरीर में समा गए थे, तो ब्रह्मज्योति। One may say, why did he do that? Because this was his third birth. He's supposed to go back to Vikunta. So what happened?
पूछ सकता है कि ये तो उनका तीसरा जन्म था, तो वो भगवान के सहयोग में क्यों संभाले? वो तो सीधे वैकुंठ भी जा सकते थे। But because Lord Chaitanya would appear, he merged into the body of Krishna to again appear as Jagai in Chaitanya Leela. चूंकि चैतन्य महाप्रभु आने वाले थे, इसलिए वो भगवान कृष्ण के सहयोग में गए और फिर से चैतन्य महाप्रभु लीला में जगाई के रूप में आए। So now we'll go on more purport. अभी हम तात्पर्य में और आगे बढ़ेंगे। अन्य लोगों को जो तटस्थ थे, जो ना तो मित्र थे ना शत्रु, किंतु भगवान के मुख के सौंदर्य को सराहने के कारण यद किंचित भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया। भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वे धाम जहाँ उनके स्वांश निवास करते हैं वैकुंठ लोक कहलाते हैं, जहाँ भगवान नारायण रूप में विद्यमान रहते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम प्रसुप्त रहता है और भगवान की भक्ति की समूची विधि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए होती है। किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियां होती हैं। जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है, वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन लोग जाते हैं। किंतु जिन लोगों में संयोगवश या संगति के द्वारा भगवत प्रेम ठीक से जागृत हुआ होता है, वे वैकुंठ भेज दिए जाते हैं। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है, जबकि गोलोक में उनकी सेवा सहज स्नेह भाव में की जाती है। Yeah, not there. So here we see the comparison of the different destinations. तो यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कि अलग-अलग जो लोग हैं उनकी तुलना की जा रही है। They attained Vikunta. वो कुछ लोग वैकुंठ प्राप्त करते हैं। So this is awakening. They actually attained prema. No. They attained prema. वो प्रेम प्राप्त करते हैं। But Vikunta prema. वैकुंठ प्रेम प्राप्त करते हैं। In Vikunta prema, one wants to experience, see the Lord is very beautiful and opulent. वैकुंठ प्रेम में व्यक्ति भगवान को बहुत ऐश्वर्यशाली रूप में देखना चाहता है। And one wants to serve him with great, offering great opulence and be in the position of servant. और वो भगवान की सेवा करना चाहता है ऐश्वर्य भाव में, भगवान को सारे ऐश्वर्य प्रदान करके और एक सेवक के जैसा सेवा करना चाहता है। As Śrīla Prabhupāda says here in Goloka Vrindavan, that people serve with natural affection. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि गोलोक वृंदावन में सभी लोग नैसर्गिक स्नेह के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। Now there was one demon who, Aghasura, when he was liberated, he should have gone to Brahmajyoti. तो एक राक्षस थे वृंदावन में, अघासुर। जब वो मुक्त हुए थे तो वो ब्रह्मज्योति जा सकते थे। But as the soul, once Krishna choked the body of Aghasura, जब भगवान कृष्ण ने अघासुर के गर्दन को चोक कर दिया, the soul came out of the mouth. तो उसकी आत्मा जो थी वो मुंह से बाहर निकल गई। And as the soul was passing by Krishna, he looked at Krishna's face. जब वो आत्मा कृष्ण के बगल से जा रही थी तो उसने कृष्ण की तरफ देखा। And he attained Vikunta. और उसके बाद उन्होंने वैकुंठ प्राप्त कर लिया। This is how powerful it is to see Krishna. ये बहुत इतना शक्ति है भगवान कृष्ण को देखने में। Therefore, when we see the deity, we should be very careful to see Krishna. No. इसलिए जब हम भगवान के विग्रह को देखते हैं तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम भगवान को देख रहे हैं। Just appreciate his beauty in a transcendental way, not thinking, oh, please Krishna, do this for me, do that for me. No. हम भगवान की सुंदर दिव्य सुंदरता को प्रशंसित तरीके से देखना चाहिए। केवल ये नहीं करना चाहिए कि भगवान से मांगते रहें कि मुझे ये दो, मुझे ये दो। Śrīla Prabhupāda warned us so many times we should not convert Krishna into the order supplier. श्रील प्रभुपाद ने हमें कई बार सावधान किया कि भगवान कृष्ण के साथ हमें ये कुछ देने और कुछ लेने का बिजनेस धंधा नहीं करना चाहिए। But we always serve Krishna in two ways, which is mentioned in the beginning of the Bhagavatam. हम भगवान को दो प्रकार से सेवा करते हैं जो कि भागवत के प्रारंभ में ही दिया गया है। Yayatma suprasidati. The way that one can be fully satisfied is by serving Krishna
with ahaituki, with no motivation, nothing for myself, and yapatiyata, and 24 hours a day. तो दो प्रकार से करना चाहिए। एक तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए कुछ नहीं है, हम सब कुछ भगवान के लिए करेंगे, और वो सेवा हमेशा करनी चाहिए, कभी रोकनी नहीं चाहिए। I always say, you just serve Krishna for 24 hours. No, that's all. 24 hours a day. मैं ऐसा बताऊंगा कि आप केवल भगवान कृष्ण को 24 घंटे पूरे समय सेवा करिए, And the rest of the time you can do what you want. और बाकी समय आपको जो करना है वो कर सकते हैं। The Prabhupada said this. No, he said भगवान ने ऐसा बताया, just serve Krishna 24 hours. The rest of time is yours. No. 24 घंटे भगवान की सेवा करिए, बाकी समय आपके पास है। So actually nothing is ours. In other words, no. तो उससे हम देखते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ कृष्ण के लिए। So we can see how fortunate these soldiers were. हम देख सकते हैं कि ये सैनिक कितने सौभाग्यशाली थे। Of course, this is all Krishna's plan. No. ये सब कुछ भगवान का ही विचार था। Therefore, Krishna made the arrangement before the battle that those persons who needed to be promoted to Goloka Vrindavan were arranged to come into this battle, and not to Goloka, but to Vikunta, and they came into this battle as soldiers. No. तो भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से किया था कि जो भी जीव वैकुंठ जाना चाहते थे, भगवान ने इस प्रकार से व्यवस्था किया कि वो इस युद्ध में आके युद्ध करें। But it doesn't. So Śrīla Prabhupāda says that no matter what your destiny is in relation, if it's in relation to Krishna, it is a blessing. प्रभुपाद बताते थे कि आप किसी भी अवस्था में हो, परंतु अगर आपकी अवस्था भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो ये अपने आप में आशीर्वाद है। Just like at the end of Kali Yuga, Kalki will come and kill all the demons. जैसे कलयुग के अंत में कल्कि अवतार आएंगे और सारे राक्षसों को मार देंगे, And they will be miserable. They're only 1 meter high. और बहुत छोटे-छोटे दुखी होंगे, केवल 1 मीटर उनकी ऊंचाई होगी। And because there's no water, they drink blood. और चूंकि उस समय कोई जल भी नहीं होगा, तो वो खून पिएंगे। But when Kalki kills them, then they attain Brahman. और जब कल्कि अवतार उनको मारेंगे, तो उनको भी ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाएगी। And then from Brahman, they can descend to the material world as a pious person. और ब्रह्म ज्योति से बाद में वो भौतिक संसार में एक पुण्यशाली व्यक्ति के जैसे जन्म ले सकते हैं। And because they had contact with the Lord, they can develop some attraction for the Lord. क्योंकि उनका भगवान से संपर्क भी हुआ है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो भगवान के प्रति स्नेह प्राप्त करें। Śrīla Prabhupāda here refers to Nityasiddha Krishna Prem Sabya Kabinoi, that we all have Krishna consciousness latent within our hearts. श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हम सभी के हृदय में कृष्ण भक्ति है। We just have to awaken it. इस सुसुप्त अवस्था में है, हमें उसको जगाना है। यह भगवत प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहाँ पर पार्थास्त्र पूर्णतः शब्द महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी थी, उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से शुद्ध बना दिया। भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे, और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करके उनकी सहायता कर रहे थे। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से इनकार कर दिया था, और अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए भगवत गीता का संपूर्ण उपदेश दिया गया था। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष इसे वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह अर्जुन ने संसार के भार को कम करने के भगवान के उद्देश्य में सहायक बनने के लिए युद्ध किया। शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के पास करने के लिए ऋषि कुछ नहीं रहता। अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार के तुल्य था। ज्यों ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते, वह शत्रु सारे भौतिक कर्म से शुद्ध होकर वैकुंठ जाने का पात्र बन जाता। जिन योद्धाओं ने भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से भगवान के मुख को देखा, उनमें सुप्त भगवत में जाग उठा, और इस तरह वे लोग शिशुपाल की ही तरह ब्रह्म ज्योति की निर्विशेष दशा में नहीं, अपितु सीधे वैकुंठ लोग भेज दिए गए। शिशुपाल भगवान की प्रशंसा किए बिना मर गया, किंतु अन्य लोग भगवान की प्रशंसा करके मरे थे। दोनों ही को आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिनमें भगवत वेद जागृत हो चुका था, वे दिव्य आकाश के लोकों में भेज दिए गए।
उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के योद्धाओं से भी न्यून है, क्योंकि उन लोगों को तो वैकुंठ लोक मिल चुका था, जबकि उद्धव भगवान के देवोधान का शोक ही करते रह गए। So, a few important points here in this last part of the purport. इस So, तात्पर्य के अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं। so here we see, first they were purified by the arrows of Arjuna. यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अर्जुन के तीरों के द्वारा शुद्ध हो गए। Generally, we're not so anxious to be purified by an arrow. No. नॉर्मली हम इतने चिंतित नहीं होते हैं कि हम तीरों के द्वारा शुद्ध होंगे। No. Nobody runs out and says, "Please shoot me with an arrow." No. कोई बाहर भाग के ऐसा नहीं जाता है कि मुझे तीर चला दीजिए मेरे ऊपर। But if it comes from Arjuna, then better to accept it. पर जब वो तीर अर्जुन की तरफ से आता है तब उसको स्वीकार करना चाहिए। Just like Bhishma Dev, he saw the Lord and he wanted him to break his promise, and he wanted him to kill me. Lord, kill me. I'm a Kshatriya. This is the best way to die. No. जिस प्रकार से भीष्म देव चाहते थे कि भगवान अपना उन्होंने जो शपथ दी थी उसको तोड़ दें, और वो खुद भगवान से बोल रहे थे कि भगवान आप मुझे मार दीजिए, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे मार दीजिए। Just like Prasad, he was telling Indra, "Please kill me. I want to go back with Krishna. I want to go back with Lord Narayan." वृत्तासुर भी इंद्र से बोल रहे थे कि आप मुझे मार दीजिए, मैं भगवान के धाम वैकुंठ में जाना चाहता हूँ। So we may not want to be killed like that because we're not Kshatriyas. No. हम उस तरह से शुद्ध होना हो सकता नहीं चाहे, क्योंकि हम क्षत्रिय नहीं हैं। But those who chant Gayatri mantra, they're also asking for Krishna to shoot arrows of flowers into my heart. No. और जो गायत्री मंत्र करते हैं वो भी कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप तीरों का जो बाण है वो मेरे हृदय में चलाइए। This is one of the mantras. This is one of the mantras of the Gayatri, that please Krishna shoot the arrows of prema into my heart. गायत्री का एक मंत्र है कि हे कृष्ण अपने पुष्प बाण हमारे हृदय में चलाइए। So we also want arrows, no, but different kind of arrow. Flower arrows better. हम भी तीर चाहते हैं, परंतु वो तीर फूल का है, पुष्प का है। Just like when we have abhishek, sometimes we cover the body of the deity with flower petals, and then we shoot the petals to everyone's heart, hopefully. जैसे कभी-कभी हम अभिषेक करते हैं तो भगवान के शरीर को फूल से ढक देते हैं, उसके बाद हम फूल को फेंकते हैं। Although they may fall on your head, no, or on your clothes, but actually they're supposed to penetrate into the heart. No. हो सकता है वो हमारे सिर में या कपड़ों में लगे, परंतु वास्तविकता में वो हृदय के अंदर जाना चाहिए। So Lord Chaitanya, when he was praying to Lord Jagannath, one prayer which comes from the 90th chapter, almost at the end of the 10th canto. वो चैतन्य महाप्रभु एक प्रार्थना करते हैं जो कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतिम 90वें अध्याय में अंत में आती है। He says that Vishnivara Parishat, that O Krishna, the best of the Vrishni dynasty. वो बताते हैं कि हे कृष्ण, वृष्णि वंश के सर्वोत्तम व्यक्ति। Asandur, no, I'm sorry, Swayardur Bir Yasan Adharmam. He says that you with arrows, you kill the impious and bless them. वो उस प्रार्थना में ऐसा आता है कि हे भगवान आप तीरों से जो पापी लोग हैं उनको मार दीजिए और इस प्रकार से उनको आशीर्वाद दीजिए। You do this with Swayardur Bir, with your strong arms. आप अपने बहुत मजबूत भुजाओं के द्वारा इस प्रकार से करिए। But another understanding of Swayardur Bir is the arms of Arjuna, which are shooting arrows. No. परंतु उस शब्द का एक और मतलब है जो कि अर्जुन की भुजाएं जिसके द्वारा अर्जुन तीर चलाते थे। And with those arrows, one can be completely purified. और उन तीरों के द्वारा व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। Vajapuram Banitanam, that Bhardayan Kamadevam, that with those arrows, if one can meditate on the sentiments of the gopis of Vrindavan, one can attain the same destiny.
इस प्रकार से आता है कि यदि कोई गोपियों का भगवान के प्रति जो भाव था उसके ऊपर ध्यान लगा सके तो उसको भी वही गति प्राप्त हो सके। So Śrīla Prabhupāda begins this paragraph by saying how one gets this fortunate position to go back home, back to Godhead. इस पैराग्राफ के प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत धाम जाने की सौभाग्यपूर्ण अवस्था हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। By the association of the devotees. भक्तों के संग के द्वारा। This is the most important thing. ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। Lord Chaitanya gave 5 items that are the most important observations in bhakti. चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे 5 वस्तुएं बताई जो कि भक्ति के अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण है। And the first and most important one is sadhu sangha. और उसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण है साधु संग। Although the most essential one is nama kirtan. यद्यपि उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नाम कीर्तन है। But without sadhu sangha, how will we learn nama kirtan? बिना साधु संग के हम नाम कीर्तन कैसे सीख पाएंगे? So everything begins with the association of devotees. तो भक्तों के संग से ही सब कुछ प्रारंभ होता है। But that association should not be ordinary. पर वो संग भी सामान्य नहीं होना चाहिए। Just like in preparation for a future verse, it says at the end of this purport, Uddhava was lamenting his own position. It was less than the warriors on the battlefield. जैसे इस तात्पर्य के अंत में एकदम बताया जा रहा है कि उद्धव शोक कर रहे थे कि उनकी स्थिति तो कुरुक्षेत्र के योद्धाओं से भी नीचे है। And later in the next few verses, he will say that I think that the demons are more fortunate than we, the Vrishnis. और अगले कुछ श्लोकों में वो बताएंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो राक्षस हैं वो ज्यादा सौभाग्यशाली हैं वृष्णि वंश के लोगों की तुलना में। Especially Kamsa, he was very fortunate. विशेष रूप से कंस वो बहुत सौभाग्यशाली थे। He was always thinking about Krishna. क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे। And sometimes we think about Krishna, sometimes we don't. कभी हम तो ऐसा है कि कभी कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कभी नहीं सोचते। And we see him as Paramatma. हम उनको परमात्मा जैसा देखते हैं। So of course this is due to his ecstasy, no? ये उनके प्रेम के कारण, उत्कल प्रेम के कारण बोल रहे हैं। Not that we all want to come out and become Kamsas and to be more fortunate than the Vrishnis. इसका ये मतलब नहीं कि हम सब बाहर जाके कंस जैसे बन जाएं और सोचें कि हम तो वृष्णि वंश से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। No, devotional service should be anukula. It should be very favorable. भगवत भक्ति अनुकूल होनी चाहिए। And Krishna Anushilanam, it should be very constant and powerful. और भगवान के लिए लगातार सतत रहने के प्रयास करना चाहिए। And so here it's mentioning Shishupal, although he was not on the battlefield of Kurukshetra. यहाँ पर शिशुपाल के बारे में बताया गया है, यद्यपि शिशुपाल कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं थे। Because he was mentioned in a previous verse. क्योंकि शिशुपाल का वर्णन पिछले श्लोक में था, इसलिए इस श्लोक में उनका वर्णन हो रहा है। And it says that in a previous verse that he could not attain Krishna, he only attained Brahman. पिछले श्लोक में ऐसा लिखा था कि शिशुपाल केवल ब्रह्म को प्राप्त कर पाए, कृष्ण को प्राप्त नहीं। So Śrīla Prabhupāda is just mentioning again Shishupal to show that one should associate with the devotees like Arjuna, or if there's no Arjuna here in Bharacha, then you associate with who is available. No. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अर्जुन जैसे भक्तों का संग करना चाहिए, और अगर अर्जुन जैसे भक्त उपस्थित नहीं है तो फिर जो भी उपस्थित उपलब्ध अच्छे भक्त हैं उनका संग करना चाहिए। Of course, we can also associate with Arjuna in Bhagavad Gita. हम अर्जुन का भी संग कर सकते हैं भगवत गीता का अध्ययन करके। But a devotee should feel very fortunate that Krishna put me in this place or that place for some reason. तो भक्त के जैसे हमें ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने हमें इस जगह या उस जगह पर रखा है, तो ये हमारा सौभाग्य है। And if I come into contact with the devotees, I should feel I'm very fortunate. अगर हम भक्तों के संग में आ जाते हैं तो समझना चाहिए कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। Not that one should be puffed up. Why wasn't I born with Rupa Goswami? No. कभी ऐसा घमंड हो के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जन्म रूप गोस्वामी के Why the devotees of Bharacha? No. क्यों डिवोटीज क्यों यहाँ पे मेरा जन्म हुआ? I want to be with the associates of Mahaprabhu.
No? मैं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के जैसा बनना चाहता था। But Prabhupada said, don't demand, deserve. श्री प्रभुपाद ने बोला कि हमें इस प्रकार से भगवान से अनुग्रह नहीं करना चाहिए, अपने आप को उठाने का प्रयास करना चाहिए। No, you have to deserve. Then you can take birth with Rupa Goswami and the 6 Goswamis in some other Kali Yuga. No? जब हम आध्यात्मिक रूप से इतने योग्य हो जाएंगे, तब हम रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी इनके साथ Or जन्म ले सकते हैं, you can go back home, back to Godhead. और या हम भगवत धाम जा सकते हैं। So these are some thoughts on this verse. I'll stop here. तो इस श्लोक के बारे में ये मेरे कुछ विचार थे, अभी हम यही को विराम करेंगे। Any comments or questions? कोई विचार या कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। So either it was very clear or I didn't know what I was talking about. No? Maharaj, Prabhu is asking one question. Yeah. That in the case of Adasur, the soul emitted from the mouth. He is asking that in the case of Agasur, the soul came out from the mouth. Mm-hmm. So, from every living entity, does the soul comes from the mouth? In case of every living entity. Generally, I'll go to the question. एक प्रश्न है कि अघासुर के घटना में हम देखते हैं कि उसकी आत्मा मुंह से निकल के गई बाहर, तो क्या सामान्य लोगों के केस में भी ऐसा होता है कि उनकी आत्मा मुंह से बाहर निकलती है? If a devotee is chanting, then the soul can come through the mouth. No. जब भक्त नाम जप कर रहे हैं, तब उनकी आत्मा मुंह से निकल सकती है। The soul comes from, generally leaves the body from whatever chakra it is situated in. सामान्यतः आत्मा जिस चक्र में स्थित होती है, उसी चक्र से वो शरीर छोड़ती है। Most people in Kali Yuga, the soul is basically in the Mula chakra. No. तो कलयुग में बहुत सारे लोगों के लिए जो आत्मा है वो मूल चक्र में स्थित होती है। Or the Udara chakra, because they're always thinking of eating and sleeping. No. और उदर चक्र, क्योंकि लोग ज्यादातर खाने और सोने के बारे में ही सोचते रहते हैं। And if they're in the mode of goodness, it may reach the heart region. No. और अगर वो सत्वगुण में है तो आत्मा हृदय में जो चक्र है वहां तक पहुंच सकती है। But if we're chanting Hare Krishna, or maybe we're not able to chant because of our bodily condition, but someone is chanting, then the soul, generally speaking, you see when someone is just leaving the body, their mouth opens. खुल जाता है और वो जप कर रहा है या कोई और व्यक्ति उसके लिए जप कर रहा है, तो मुख से आत्मा निकल जाती है। That's considered to be auspicious. ये बहुत शुभ माना जाता है। So Aghasura left through the mouth because he was killed by Krishna. No. तो अघासुर की आत्मा शरीर से निकली क्योंकि वो भगवान कृष्ण के द्वारा संपर्क हुआ था। But because Krishna was in his throat, then he saw Krishna on the way out. No. तो क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनके गले को जकड़ लिया था, इसलिए वो मुख से उनकी आत्मा निकली। All right. Question? Very nice lecture and very wonderful points you enlightened. Especially we have to drink Krishna's lotus feet by our eyes. That's very heart touching, as they say. These points, so many points. So you say one point. The first important thing is association of devotees, and we got association of your holiness, and we are really purified. We are feeling. I was with you since 7 hours, and I am feeling the same thing what you are saying in your lecture. What is your observation? Any points for this Rath Yatra doing this? So, because you work very enthusiastically and you throw Prasad about 2 hours. I have seen that you're so weak. And my arm is a little sore right now. That was I was thinking that. मैं महाराज को एक प्रश्न मैंने महाराज को कहा कि आपने बहुत सुंदर प्रवचन दिया है और उसमें विशेष करके बहुत सारे पॉइंट्स मुद्दे हैं
लेकिन उसमें से एक जो कृष्ण की सुंदरता को, सुंदर मुख कमल को हमें आंखों से पीना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें सतत कृष्ण के बारे में स्मरण करना है। ये महाराज ने बहुत सुंदर मुद्दा दिया और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। फिर मैंने महाराज को कहा कि आपने बात बताई कि भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो महाराज को मैंने बताया कि मैं आपके साथ 5-6 घंटा रहा तो हम लोग बहुत ही पवित्रता महसूस कर रहे हैं और विशेष करके आप में इतना उत्साह था कि आपने 2-3 घंटे प्रसाद जोर से सबको, सब भक्तों को दिया और वो लोग भी पवित्र हो गए। तो महाराज ने बोले मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। So I consider that I'm more fortunate than all of you. महाराज बोले कि मैं ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ आप लोगों की तुलना में। Because you get each other's association, but I got the association of devotees in Delhi, and then Rajasthan, and then Ahmedabad, and now Surat. So I'm getting, with all that association, I think I'm more fortunate. You know? तो क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे सभी भक्तों का संग मिलता है, परंतु मुझे दिल्ली में भी संग मिला, फिर राजस्थान में संग मिला, फिर अहमदाबाद, फिर सूरत, तो मुझे बहुत भक्तों का संग मिला, इसलिए मेरा सौभाग्य रहता है। Sometimes traveling is very taxing on the body. कभी-कभी यात्रा करना शरीर के लिए बहुत हानिकारक जैसा होता है। But one gets the benefit of so much association of the Vaishnava. परंतु जब हम यात्रा करते हैं तो बहुत सारे भक्तों का संग मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। So, therefore, somehow or another, Krishna sees I need so much more purification that he's putting me in the association of so many Vaishnavas. भगवान कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे बहुत शुद्धता की आवश्यकता है, इसलिए वो मुझे इस प्रकार से संग प्रदान कर रहे हैं। महाराज विनम्रता से ऐसा बोल रहे हैं। So the more we can associate, the more benefit we get. No? जितना हम भक्तों का संग करेंगे उतना हमारे लिए लाभदायक होगा। But we have to appreciate all the Vaishnavas. No? हमें सारे भक्तों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनका Not come with the consciousness, oh, I'm one step above. No. वो इस चेतना से आता है जब हम सोचते हैं कि मैं एक We कदम ऊपर हूँ। We should think I'm below. Let me be below all of their lotus feet. हमें No. सोचना चाहिए कि हम सारे भक्तों, सारे वैष्णवों के चरण से भी नीचे हैं, Let them trample on my head. उनको मेरे सिर के ऊपर चलना चाहिए, Like Kaliya. No. जैसे कालिया। Krishna can offer his lotus feet to our head like this or like this, depending on what we need. No. तो इस प्रकार कालिया का ऐसा था और हमें सोचना चाहिए कि भगवान हमारे सिर के ऊपर चले, चाहे कालिया के जैसे जोर से, चाहे सामान्य, परंतु चलना चाहिए। So most of us could use a little Kaliya therapy. No. हम सभी को कालिया थेरेपी की जरूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत उस तरह से करना चाहिए। A little kicking on the head by Krishna. No. भगवान कृष्ण के द्वारा जब सिर पे मारा जाता है तो अच्छा है हमारे लिए। So when he kicks our head, we should not complain. No. इसलिए अगर कोई हमारे सिर पे मारता है तो हमें कुछ He's only. So thank you all very much. Śrīla Prabhupāda ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. प्रसाद स्वामी महाराज की जय।